Hello students, welcome to the class. So how are you class 10th? All good? So let us start the new topic. The topics are, we have to discuss today some other reactions, some equations and magnesium ribbon activity that is given in your first page of class 10th NCERT books. Okay? So before starting, I hope your previous lecture was good. You understood all the topics. So before starting the topic, I want to ask a question. How many of you aggressively waiting for the balancing? I know in this chapter the students are really aggressively waiting for the balancing topic. सर बैलेंसिंग कब स्टार्ट करेंगे? क्योंकि ये तो मुझे आता है, मुझे बैलेंसिंग सीखना है. ओके फाइन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेम वन आल्सो, बट बिफोर दैट आई हैव टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशंस एंड मैग्नीशियम रिबन एक्टिविटी. So first we are going to discuss in these three topics. Thereafter we are started balancing, and that is really very easy, because in this chapter if you are really balance the equation, you understood how to balance the equation, the 50% of the syllabus is of this chapter, 50% of this chapter is okay sir, concept clear hua. Okay, so let us start the topic. Reactions. As you know earlier in class, reactions are nothing but indicating the chemical change. In other words, अलग अलग वर्ड में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड हम आज थोड़ी सी हिंदी भी यूज करेंगे. ओके, मुझे लग रहा था, पता नहीं कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे सर थोड़ी हिंदी भी बोल दिया करिए. ओके, सो reaction indicating the chemical change, that indicating there are some different changes that are not going to be reversed. Reactions indicating the substance must be changed from one particle, one kind of matter to the another particles or another kind of matter. The reaction also indicating the chemical change that are going to be held have some different arrangements of atoms. As you know, in a previous lecture I have a discussion about the arrangement of the atoms in reactant side that is going to be form a product, that make a product. Means the reactions always indicating some kind of changes, some kind of different formations. And when we are talking about chemical reactions, that means there must be a chemical change, in a given substance. Chemical reaction indicating chemical change in the given reactants. Okay, so students, get ready for some different kinds of reactions. Magnesium ribbon activity, in which magnesium ribbon is burned in the presence of air and make a white powder. Magnesium having a symbol of Mg, you learned in the class 9th, and in the presence of air means reaction with oxygen that exists in the form of O2, a molecule, make a white powder, that is a magnesium oxide, MgO. So the name of the compound is magnesium oxide. You can note down also, because I am not going to write here. Magnesium oxide, if there will be necessary I have to write, but this is very small molecule, a compound. You have to write, you have to learn the name magnesium oxide, because this was also given in class 9. So magnesium ribbon burn in air to form a white powder called magnesium oxide. That must be a different substance. How
That must be different substance. How? Because that is a silvery color, magnesium ribbon. That is a silvery color and hammered can be flattened, not be break, not brittle, but malleable and ductile. But this is powder. The magnesium oxide is a powder. And water solution, the aqueous solution, if we dissolve this powder, in a water, we will found the base. Magnesium oxide, if dissolved in water, we will get a base, and the name of base is magnesium hydroxide. From this activity, the magnesium ribbon activity, we have two different equations and two different reactions. Equation means the representations of the formula or symbols. In left hand side, that is a reactant, in right hand side, that is a product, and separated by a directional arrow. Directional, that indicate the direction of the reaction. मतलब कि रिएक्शन इस साइड से उस साइड गया है. So we have two equations. The one equation, the burning of magnesium ribbon. The second equation, the solution reaction of magnesium oxide, the white powder with water. We have a base, magnesium hydroxide. A base. In your syllabus, there is a one chapter, acid, base and salt. So in that chapter you will be studying about base in detail. But before that, we how can we distinguish that magnesium hydroxide and magnesium is different? On the basis of formula you can find first thing. But आप कहेंगे सर जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं we cannot see the formula ना. Practically formula तो देखा नहीं जा सकता. The formula a theoretical part है. Formula देखना एक theoretical part है. So how we really understand that there is a different substance? For that only we have to know about that base. How? Magnesium ribbon and that powder. When magnesium ribbon is burned, that will turn into the white powder. Okay, fine. So you have to do a two beaker. In one beaker, just put that magnesium ribbon. In one beaker, you have to put magnesium oxide powder. In beaker, there are water. The water filled in a beaker. So, if you want to understand that both the substances are different, the magnesium ribbon and that powder are different, you have to took a magnesium and poured in a beaker on a stirring. Magnesium ribbon does not get dissolved. But magnesium powder dissolve on stirring. Magnesium oxide, the magnesium powder dissolve on stirring. Okay, and we have a solution. But magnesium ribbon doesn't dissolve in a water. So first difference, मैग्नीशियम रिबन डिसॉल्व नहीं हुआ, पाउडर डिसॉल्व हो गया. मतलब दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं, पाला हुआ. दूसरा तरीका, दूसरा तरीका एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लैबोरेटरी में एक पेपर जिसका नाम है लिटमस पेपर, या फिर हम यूज करते हैं पीएच पेपर. लिटमस पेपर या पीएच पेपर हम लैबोरेटरी में यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेसिस. तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे and you put a red litmus paper in that beaker,
you will see that the red litmus paper turn blue, indicating the presence of base. You have to know, red litmus paper turns blue, indicating the presence of base, and blue litmus paper turns red, indicating the presence of acid. So blue litmus paper, we will get blue litmus paper. After this, when you put the red litmus paper, you will get a blue litmus. Okay, so turn blue, the color of blue indicating the presence of base. That is a different substance. But one problem is there. The magnesium ribbon also can react with water. The magnesium ribbon also can react with water. Okay. So after reacting magnesium, if magnesium ribbon doesn't react, सुनिए ध्यान से, मैग्नीशियम रिबन अगर रिएक्शन नहीं करता है वाटर से, आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा रिएक्शन किया? तो उसके लिए मैं बता दूं, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता, बट यही मैग्नीशियम बॉइल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेता है. सो यू हैव टू टेक कोल्ड वाटर, तो रिएक्शन करने की चिंता नहीं है फिलहाल. ठीक है, तो मैग्नीशियम से जिसमें आपने मैग्नीशियम ऐड किया है, जब आप उसमें रेड लिटमस डालेंगे, रेड लिटमस पेपर, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा. रेड लिटमस डजंट टर्न इनटू द ब्लू. इसका मतलब ये सबस्टेंस अलग है, ये सबस्टेंस अलग है, और ये वाला सबस्टेंस क्या है? बेस है, बेस. क्यों? रेड लिटमस क्या हो गया? ब्लू हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि ऑन बर्निंग, मैग्नीशियम के बर्न करने पर, जब हम उसको एयर में बर्न करते हैं, we will get a powder, we will get a white powder, a different substance that on dissolving in water, give a base that can turns red litmus blue, Okay, fine. So we have two different concept in here, concept in this activity. First thing, the substance, the previous substance must be changed after the reaction, because we are getting a powder, and that powder make a base with water. That powder make a base with water, indicating there are different substances. So concept of reaction, chemical reactions are the chemical reaction meaning when a substance form a new substance. When a substance form a new substance, there must be a chemical reaction occurred. वहाँ कंफर्म क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन ही हुआ है. ठीक है. दूसरी बात, मैग्नीशियम पाउडर भी वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, क्योंकि हमें एक नया सबस्टेंस मिल जाता है. So both are called chemical reaction during a burning of magnesium ribbon, during a dissolution of magnesium powder. The same time, equation means representing these chemical reaction in the formula, so we can be easily see, we can easily understand. हमें समझने के लिए, हमको पढ़ने के लिए हमें उनको फार्मूले में लिखना पड़ता है, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशंस. क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशंस. ओके. सो मैग्नीशियम रिबन एक्टिविटी से हम रिएक्शंस और इक्वेशंस समझ पाते हैं. अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो है बैलेंसिंग. So let's start the balancing topic. Students, for balancing you have to focus one thing that is really important. You have to focus one thing: number of atoms. Balancing. For this topic, you have to learn number of atoms
in reactant side must be equal number of atoms in product side. First thing, number of atoms in reactant side must be equal number of atoms in product side. Product side, but atoms same kind. Number of atoms are same kind. Number of atoms of same kind in reactant side must be equal number of atoms of same kind in product side. पहले तो आप इस बात को एकदम दिमाग में रखिए, दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ एक तरह के एटम के नंबर बराबर होने चाहिए. दैट इज अ कॉन्सेप्ट, दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट. हम कितना भी यहाँ पे प्रोसीजर बताएं, कितना भी यहाँ पे थ्योरी समझाएं, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? एक मैग्नीशियम का एटम है, इधर भी एक मैग्नीशियम का एटम होना चाहिए. दो ऑक्सीजन का एटम है, यू कैन सी O2. दो ऑक्सीजन का एटम है, इधर भी दो ऑक्सीजन का एटम होना चाहिए. बट यहाँ पे कितना एटम है? एक एटम है. इसका मतलब हमें इसको दो करना है. क्लियर? उसी तरीके से आप यहाँ कहेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम कितना, यू कैन सी OH होल ट्वाइस. हाइड्रोजन के एटम भी कितने हैं? दो. ऑक्सीजन के एटम भी कितने हैं? दो. यहाँ का ऑक्सीजन का एटम कितना है? एक. ऑक्सीजन का एटम बैलेंस नहीं है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एटम बैलेंस नहीं है. तो बैलेंसिंग में हमें इन दोनों रिएक्शनों की अगर बात करें, हमें ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करना है. ओके. सेकंड कॉन्सेप्ट, फॉर बैलेंसिंग always use a whole number and multiply that suitable number with the formula. Multiply by that suitable number with formula. जो भी फार्मूला है, जो भी सिंबल है, उसको हम उस सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो बैलेंसिंग के लिए जरूरी है. इंपॉर्टेंट बात. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मल्टीप्लाई करते समय यू कैन नॉट मल्टीप्लाई इन द फार्मूला. यू कैन नॉट मल्टीप्लाई बाय द नंबर इन द फार्मूला. मतलब अगर यहाँ पे O2 है और इस ऑप्शन को दो करना है, so you cannot write like MgO2. You cannot write like MgO2. You cannot multiply by this oxygen with 2. अगर आपको बैलेंस करना है, you have to multiply the number with the whole formula. Whole formula means you can multiply the number with the whole formula. आप पूरे फार्मूले को किसी भी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर को हमें बैलेंस करना होगा. ठीक है. अभी इसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको दिखाता हूं वन बाय वन. चलिए पहले हम लोग करेंगे ये LHS है, रिएक्टेंट का साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और यहां पे एटम है. कौन सा एटम? मैग्नीशियम एटम, ऑक्सीजन एटम. मैग्नीशियम एटम और ऑक्सीजन एटम. मैग्नीशियम LHS मैग्नीशियम 1, RHS 1, ऑक्सीजन 2, RHS 1 means in the reaction the right hand side means product side there is less oxygen. To make an equal number you have to multiply the RHS side by 2. You have to multiply the RHS side by 2. So this is already balanced. The balanced number
must be in circle. Okay, balanced number must be in circle, and to balance the oxygen you have to multiply the magnesium oxide by 2. Okay, so magnesium oxide by 2, this is your first step. First step of balancing, just write a unbalanced reaction and make a table that clarify the number of atoms in each side. Okay, 1 1 balanced, 2 1 not balanced. You have to multiply this 1 by 2. Okay, next step, second step. So in second step, first write the same formula, same equation, and multiply the magnesium oxide by 2. Multiply the magnesium oxide by 2, and again make a same table. Again make a table. So you have to see that the magnesium in LHS 1, in RHS 2, oxygen 2, and oxygen 2. Both side 2 oxygen, so oxygen in circle, that means at number of atoms of oxygen is balanced in both sides. Now we have to balance again magnesium. Magnesium become unbalanced. So in second step, oxygen balanced but magnesium becomes unbalanced. So in the third step, you have to balance the magnesium, and to balance the magnesium, the atom of magnesium must be multiplied by 2. So multiply by 2, and again make a table. So when you make a table in third times, you can see magnesium both sides becomes balanced. This is a lengthy process, but that is a real, the full concept process is that. Okay, हम 3 स्टेप में हमने इस छोटे से रिएक्शन को बैलेंस किया. हमको 3 बार टेबल बनाना पड़ेगा. मैंने टेबल जो है वास नहीं किया था, बट आपको 3 बार टेबल बनाना पड़ेगा. आपको 3 बार ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा, और अब ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया. आप नीचे हेडिंग लिखेंगे बैलेंस्ड रिएक्शन, और उसके आगे क्या लिखेंगे, 2 mg plus O2 gives out 2 MgO. Okay, so with the help of this procedure you can balance your any given reactions. मैं एक एग्जांपल लेकर और आपको समझाता हूं, उसके बाद से तब आगे बात करेंगे. You have to practice some more examples. Okay, that is really very easy. That is not really very hard. Okay, so don't worry. In example, so examples are, this is called methane gas. मीथेन गैस को हम बर्न कर रहे हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है. टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मीथेन गैस कहाँ बर्न होता है आपको पता है? जो सीएनजी ऑटो चलते हैं, सीएनजी ऑटो में जो सिलेंडर होता है उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो मीथेन गैस होता है. तो मीथेन गैस इज द पार्ट ऑफ द ऑटो सिलेंडर्स, द सीएनजी ऑटो सिलेंडर्स, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स. So I am burning this methane gas, produce carbon dioxide and water, and you can see the reaction is not balanced. So that is the first step. First make a table, LHS, RHS and atoms. Carbon, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, कार्बन in LHS 1, in RHS 1.
hydrogen 4, in RHS 2, oxygen 2, and in RHS 2 atom and 1 atom. The plus is here, so 3. So we have a carbon in both sides, already balanced. Hydrogen is not balanced, 4 and 2, and oxygen is also not balanced, 2 in LHS and 3 in RHS. In product side, 3 atom of oxygen. So first we should balance the hydrogen. In next lecture, I will continue the same balancing with some more examples, and I will give you a trick to balance more easily than that, because that is really lengthy, that is really very lengthy. But this is a procedure of your in your syllabus. This is a procedure of your syllabus. So hydrogen 4 and 2 we can multiply by 2 in RHS. So in second step we multiply by 2. There is 2 multiplied by 2. So hydrogen become, you make again table, carbon will be same number, but hydrogen become 4 here. So in RHS there will be 2 equal to 4 and 4, and oxygen become 2 and 4. Oxygen become 4, and in LHS oxygen is 2 in number. So in third step you should multiply O2 by 2. That will be 2 equal to 4, and oxygen also become balanced. So in 3 step, one by one, hydrogen and oxygen become balanced, and balanced atom must be in circle. So this is another example of balancing. In next lecture, I will try to balance some more example so that can be easily understandable. Okay? Do one thing only. Make search some example from your book and try to balance the examples. If any doubt will be there, the next lecture must be clear your all doubts. Okay? हम अगले लेक्चर में भी बैलेंसिंग करेंगे, और हम बैलेंसिंग के बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि टॉपिक क्या होगा, कुछ मजेदार, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। उसके पहले आप कुछ एग्जांपल्स अपने से सर्च करिए, अपने से खोजिए, अपने से बैलेंस करिए। कोई प्रॉब्लम मुझे बताइए। ओके, हैव अ गुड डे।